Machephy Eduworld. So सबसे पहले एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं. अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस बनता है छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स से. So all of this will have little small vectors. I'll call them as small m vectors. सबका अपना अपना मैग्नेटिक डाइपोल है. At the atom level or crystal level, there is a magnetic dipole of individual matter. So m is the magnetic moment of this. M is the magnetic moment. So because as I said, hydrogen atom में जैसे होता है, hydrogen atom में electron revolve कर रहा होता है. So basically a current is flowing around the atom. And current carrying conductor magnetic field generate करता है. It acts as a magnetic loop. Current carrying loop. So current carrying loop magnetic field generate करता है. And that is how particles and atoms and crystals, they collaborate together to result in magnetic moment. एक small current carrying loop magnetic moment की तरह magnetic dipole की तरह act करता है और magnetic dipole का magnetic moment. Going again, so atoms, molecules and particles, because they are positively and negatively charged, so electrons revolve around them, so they act like a current carrying loop. Current carrying loop को हम compare करते हैं magnetic dipoles, और magnetic dipole का magnetic moment होता है जिसकी वजह से magnetic field होता है. So magnetic moment is your m vector. और magnetic moment जब एक quantity define करते हैं, that is magnetization or intensity of magnetization. Magnetic moment is m vector और यहाँ से हम define करते हैं intensity of magnetization. That is your capital M vector. So capital M vector is small m vector per unit volume. So ये first thing थी. अभी external कोई भी magnetic field apply नहीं किया गया. अभी कोई external magnetic field apply नहीं किया गया. This was inherent property of a magnet. Inherent property of a magnet. Abhi now we are going to do next thing is external magnetic field में इस substance को put करते हैं. So there is some external magnetic field जिसमें substance को put करते हैं. So external magnetic field की वजह से magnetic induction होता है. Means already जो magnetization हुआ है, that is m vector. Already जो magnetic moment की वजह से magnetism था, that is m vector. और इसकी वजह से अच्छा intensity of magnetization की वजह से जो internal magnetic field था, Bn, that is internal magnetic field, खुद का magnetic field, that is written as mu naught into m vector. This is mu naught into m vector. Magnetization को mu naught से multiply कर दिया, this becomes the internal magnetic field. इसके बाद जब external magnetic field apply करते हैं, so what we get is an induced magnetic field. इसमें फिर induce होता है magnetic field, and that induced magnetic field, external की वजह से जो induced magnetic field है, that is called as mu naught into H vector, where H vector is called magnetic field strength. H vector is called magnetic field strength. So B internal magnetic field, that is mu naught times the intensity of magnetization, and external field की वजह से जो induce हो रहा है magnetic field, that is your mu naught into H vector, where H vector is magnetic field strength. यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
Okay. So U naught into H is equal to B exterior, right? हाँ, बी एक्सटर्नल लगाया था, उसकी वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, दैट इज म्यू नॉट इनटू एच। ये एक्सटर्नल के इक्वल नहीं है, एक्सटर्नल की वजह से जो इंड्यूस हो रहा है वो है ये। गॉट इट? Yes. एक्सटर्नल की वजह से जो इंड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल के इक्वल नहीं होगा, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो अभी दोनों का जो सम होगा दैट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दैट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा इंटरनल वाला जो था प्लस इंड्यूस्ड वाला जो था मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल प्लस इंड्यूस्ड मिला के दैट विल गिव यू दी मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड। कितना होगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। So that is written as B in internal हो जाएगा mu naught into M vector and B induced हो जाएगा mu naught into H vector। तो यहाँ से टोटल आ जाता है B vector equals to mu naught into M vector magnetization plus magnetic field strength factor। Note this down। टर्म्स के नाम बहुत ही सिमिलर है, अभी कई बार रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके क्लैरिटी आएगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अंदर वाले मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से, जिसकी वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ एंड इंड्यूस वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, दैट इज एच वेक्टर। और दोनों को सम करने के बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, अंदर वाले की वजह से प्लस इंड्यूस्ड वाले की वजह से टोटल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। So magnetic intensity of magnetic field strength and magnetic field induction is same. नो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। सर बट फोर्थ वाले पॉइंट में तो ये फॉर्मूला उसमें ही आया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फोर्थ वाले में मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों सेम चीज है। सर तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। हाँ, दोनों का फॉर्मूला सेम, बस नाम, दोनों का मीनिंग भी सेम। दे आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सब्सटेंस ये बी वेक्टर। Okay, after this, see, now our magnetic field intensity, the magnetic field induction, the magnetic field induction, that is related to magnetic field intensity by this relation B is equal to xi h. B is equal to mu h. And the magnetization, intensity of magnetization is related to magnetic field intensity by this relation M is equal to xi h. So B is equal to mu h, M is equal to xi h. And we have this relation B vector equals to mu naught
H vector plus M vector. So I can write B vector is equal to mu H vector. Then mu naught H vector, I can keep it like this, and M vector I can put it here. So H M vector will become xi H. So this will be mu H vector equals to mu naught H vector into 1 plus xi. Mu naught 1 plus xi into H vector. अच्छा, mu by mu naught यहाँ पे आ रहा है, mu by mu naught from here, that is equal to 1 plus xi. What is mu by mu naught? That is the relative permeability. So relative permeability is 1 plus the magnetic susceptibility. So ये relation क्या बता रहे कि जो magnetic field induction है वो proportional है magnetic field intensity. Magnetic field induction is proportional to magnetic field strength. And this relation tells that magnetization, intensity of magnetization, that is a fraction of, that is proportional to magnetic field strength. And from there, we get this result, mu r is equal to 1 plus xi. I should write xi m, that is magnetic susceptibility. So it's better if you remember this result and this result. And the final result of this. और ये वाला भी याद रखना है. All the definitions are important, so you have to remember that also. Okay, now based on xi, I can, there are properties of substances that are named. So if xi m is small and negative, if xi m is small and negative, that is, और small भी नहीं लिखते, सिर्फ negative लिखते हैं, xi m is negative. So these type of substances are called diamagnetic substances. That is, xi becomes less than 1. Xi less than 1 होगा तो, no, xi is negative. So xi is less than 0. This means that relative permeability is less than 1. So this gives, these types of substances are called diamagnetic substances. Diamagnetic, the same thing as in जो chemistry में होते हैं, जब electrons paired होते हैं तो ये case आता है. And second types are if xi m is positive and small. Positive and small, then xi m is greater than 0 and mu r is greater than 1, and these are called paramagnetic. Paramagnetic में क्या होता है, electrons unpaired होते हैं. So it responds positively to the external magnetic. And third case, those are called the ferromagnetic substances. If xi m is large positive, 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 400 हो जाए. So again, xi m is very big, large positive, so it is called a ferromagnetic substance. Ferromagnets में ढेर सारे, first thing is the individual atoms में ढेर सारे unpaired electrons होते हैं, like iron हो गया, nickel हो गया, chromium हो गया, and besides that they are arranged in such order that it produces a large magnetic field. हल्का सा magnetic field apply किया तो बहुत ज़्यादा magnetic field मिल जाएगा, and electromagnets में use करते हैं. These are ferromagnetic substances.
So diamagnetic substances का Xiam negative होता है. Xiam negative है means you can see from this relation that जो external field induce हो रहे हैं वो magnetization की opposite direction. Okay, so H vector and M vector have opposite direction. तो अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से भी कम हो गया, have opposite directions. So ये तब होता है जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए. happens जब एटम्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए. डाइपोल मोमेंट तब जीरो होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं. When that magnetic dipole moment is there. Okay. And in this case, of course, I am positive, so H vector and M vector have same directions. They have same directions. So this happens when atoms and molecules, they have a net magnetic dipole. Happens when atoms and molecules have net magnetic dipole. So see, individual magnetization, this dipole moments will be in random directions. In random direction. But जैसे ही external magnetic field apply करते हैं, so they try to align themselves in a single direction. This is when external magnetic field is applied, and this is when the object is on its own. कोई external magnetic field apply नहीं करते. तो atoms में सारे electrons paired हो जाते हैं तो dipole moment zero हो जाता है, and that becomes a diamagnetic substance. And if all the electrons are not paired, some electrons are left unpaired, it is a ferromagnetic substance. But ferromagnetic substances में क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े regions होते हैं जिनको हम बोलते हैं domain. So there are regions like random structures जिनको हम बोलते हैं domain. और domains का net magnetic field होता है, ये paramagnetic ही है, but they have structures in them that are called domains. So individual atoms मिलके they have a net magnetic field of its own. But जब randomly arranged होते हैं तो कोई भी net magnetic field नहीं होता. They are just up and down in any direction. But just as you keep it in a magnetic field, these are all domains. So domains are small packets of regions where there are many atoms or molecules, these electrons unpaired. And when you apply magnetic field to this, all of the domains, they start to align themselves. Actually, it's not deep में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा content है, but it is not in your syllabus, so I'll not be going in much deep. Just remember these lines जो मैं बोल रहा हूँ. So जब external magnetic field लगाते हैं तो domains, मतलब domain की पूरी बहुत बड़ी theory है, how it happens, पूरा mathematics है, statistical mechanics है, but not required at your standard. तो जब external magnetic field लगाते हैं तो domains का जो individual magnetic field है वो सारा align हो जाता है on application of magnetic, on application of external magnetic. और इसके बाद क्या होता है, अगर रिमूव भी कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, रिमूव भी कर दिया तो डोमेन्स अलाइन हो गए. जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो अलाइन हो गया. अलाइन होने के बाद ये परमानेंट मैग्नेट बन गया.
पहले सॉफ्ट आयरन कोर था, सॉफ्ट आयरन में सारे डोमेन्स अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट थे। फिर मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो सारे डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दिया तो भी ये इसी फॉर्म में रहता है। जो परमानेंट मैग्नेट है इसीलिए दे रिटेन दी मैग्नेटाइजेशन। परमानेंट मैग्नेट दे रिटेन दी मैग्नेटाइजेशन। And after this, we have something by Madame Curie. So Madame Curie also did the research on these substances. So in 1895, she discovered that the temperature के साथ magnetization vary करता है. So magnetization M, Madame Curie discovered that magnetization M of a paramagnetic substance, it varies with temperature and is directly proportional to the magnetic intensity and inversely proportional to the temperature. टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन कम होता है. The absolute temperature, सेल्सियस वाला नहीं, केल्विन वाला, absolute temperature. Short, she did a lot of research on substances, of course on radioactivity that you already know. So this is proportional to, magnetization is directly proportional to the magnetic intensity and inversely proportional to the temperature, absolute temperature. So this result is written as the Curie's law. This equation is called the Curie's law. So you also know that M is equals to xi h, right? From here, this relation M is equal to xi h. So if M is equal to xi h, I can compare these two and write this implies that xi is equal to Curie's constant upon T. So C is called the Curie's constant. Curie constant. And C upon T, a temperature constant है, so M will be directly proportional to just H. So this happens at constant temperature. At constant temperature, xi remains the same. So xi also varies with temperature. And this happens only for paramagnetic substances. Yeah, I'll give you a homework that you should write in your note. Just refer your book. So write a brief note on, first is paramagnetism. These questions are asked like this in board exams. Paramagnetism, second is diamagnetism. Short note means at least write 8 to 10 lines. Paramagnetism, diamagnetism, and third is ferromagnetism. It explain, first write the xi values, mu values, and then why substances are paramagnetic, why substances are diamagnetic. Then talk about domains in the ferromagnetic substances. Okay. This will be your homework. After this, we are going to study about something which is called hysteresis. And this term is very important. The topic name is hysteresis, or this comes from the word hysteria, that it remembers what has been done to it, what has happened before.
So see, we're going to take up two quantities and draw a graph, and those two quantities will be magnetic magnetization M, and H. इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाएं. So H will be drawn against this and B will be drawn against this. So the graph starts like this. कोई मटेरियल लिया और इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. सी इनिशियली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है और इंटरनली भी डोमेन्स रैंडमली अरेंज्ड. जब डोमेन्स रैंडमली अरेंज्ड रहेंगे तो एम भी जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा. सो इनिशियली बी एक्सटर्नल भी जीरो होगा, बी इंटरनल भी जीरो, बिकॉज डोमेन्स आर जस्ट जो डाइपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए. दे आर जस्ट अरेंज्ड इन random directions like this. All of them are cancelling each other. So हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है. फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा. मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा. सो मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, अंदर जो चेंज आ रहा है दैट इज मैग्नेटाइजेशन. सो हियर आई शुड राइट P M. So as H increases, M also increases. As H increases, M also increases. उसके बाद एक लिमिट आ जाएगी. अगर H को इंक्रीज भी करेंगे तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, H को बढ़ाते भी जाएंगे तो M पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो वहां पे सैचुरेशन हो गया. तो सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन, और ज्यादा अलाइनमेंट नहीं हो सकता, और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता. सो व्हाट वी डू नाउ, अभी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं. पहले डिक्रीज कर रहे हैं, पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं. जब डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन भी कम होने लगता है, बट उतना कम नहीं होता. सो डिक्रीज करने पे ग्राफ सेम पाथ फॉलो नहीं करता, इट फॉलोज अ बिट डिफरेंट पाथ. सो मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है बट उतना कम नहीं हो रहा है, ओरिजिनल पाथ फॉलो नहीं कर रहा है. आफ्टर दैट एक्सटर्नल को हम नेगेटिव करते हैं, पूरा उल्टा करते हैं. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जब अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव भी कर दिया तब भी कुछ डाइपोल्स हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं. एंड दैट इज व्हाई H को नेगेटिव भी कर दिया तो भी M पॉजिटिव है बट कम हो रहा है. यहाँ पे H पॉजिटिव है बट मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है. H नेगेटिव, M पॉजिटिव. उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अगेन मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया. फिर और कम करते जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को. सो अगेन अब जो डाइपोल्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए. तो डाइपोल स्टार्ट अलाइनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैग्नेटाइजेशन उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है. फिर इस यहाँ पे भी सैचुरेशन हो जाएगा, नेगेटिव में भी सैचुरेशन हो जाएगा. उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे भी तो भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा पॉसिबल. देन फिर नेगेटिव में डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं. सो अगेन द ग्राफ डज नॉट गो टू जीरो. मैग्नेटाइजेशन अभी भी नेगेटिव है, सॉरी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला वो अभी भी वो जीरो हो गया, बट देयर इज मैग्नेटाइजेशन इन द नेगेटिव. तो नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन मींस अभी भी कुछ डाइपोल्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, सारा रैंडमाइज नहीं हुआ है. एंड देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ H. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिर से पॉजिटिव कर दिया, फिर धीरे धीरे ये जीरो हो जाता है मैग्नेटाइजेशन एंड इट गोस लाइक दिस. तो ये जो बाहर वाला कर्व है दैट इज represented by this black line is called the hysteresis graph. Hysteresis curve.
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर क्या चेंज आ रहा है दैट वी कैन सी हियर। और ग्राफ तुरंत जीरो नहीं हो रहा है, ग्राफ कभी जीरो नहीं होता, फिर से डिक्रीज करते जाएंगे, यही वाला लूप इट कीप्स ऑन फॉलोइंग, it keeps on following this loop. And we can mark important points on this. Call this point as A, B, center is O. We have two important regions, OB. OB is called retentivity. OB is called retentivity. And OC, OC is called coercivity. So an important property is magnetic coercivity. So retentivity it is defined like this: retentivity of a substance is a measure of the magnetization. Is a measure of the magnetization remaining in the substance, remaining in the substance when magnetizing field is removed. So इस पॉइंट पे H जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव कर दिया, ये जीरो था. So इस टाइम पे मैग्नेटाइजेशन कुछ रिमेनिंग है यहाँ पे. That OB is called the retentivity. OB is called the retentivity. And this OC is called the coercivity. Coercivity, that is the magnetic field strength जब magnetization zero हो रहा है. So we can define coercivity. Coercivity of a substance is a measure of reverse magnetizing field required measure of reverse magnetic field required to destroy the remaining magnetization of the substance. To destroy the remaining magnetization of the substance. So जब magnetization यहाँ पे C हो जाएगा, that is on the opposite direction, तब क्या हो जाएगा, magnetization zero हो रहा है यहाँ पे. इस point magnetization zero है, but H की value negative. So this is the reverse magnetic field required to destroy the remaining magnetization of the substance. Note this down. So यहाँ पे हम देख सकते हैं magnetization is not going to zero even when H is going to zero, M is not going to zero. So this property कि थोड़ा delay के बाद M थोड़ा delay के बाद zero हो रहा है, H पहले ही zero हो जा रहा है यहाँ पे, H इस केस में यहाँ पे H zero हो जा रहा है, but M थोड़ी देर बाद zero हो. So this property is called the hysteresis. थोड़ी देर बाद direction change, तुरंत change नहीं magnetization. Okay, so this is called hysteresis. That is the lagging of M, the lagging of magnetization.
behind the magnetic field strength. Magnetization M behind the magnetic field strength. That is called the H. It is called hysteresis. So in devices like transformers that we'll be studying in next chapter, we need to change the direction of magnetic field many times. And if this hysteresis is more, then there is a loss of energy in that. So we want substances which have low hysteresis. So I'll draw the hysteresis curve for two cases. The first case, that is for steel. For steel, the hysteresis loss is more. So this graph has a greater yield. And a good option for using substances in which we have to induce magnetic field many times is a soft iron. For a soft iron, the hysteresis graph looks like this. This is for a soft iron. So soft iron is preferable to be used in electromagnets and the transformers. For soft iron, retentivity is greater. Retentivity is greater. And coercivity is smaller. So you can write retentivity of soft iron is greater than steel. This is the retentivity. And coercivity, that is this width, coercivity of soft iron is less than steel. And the hysteresis loss is the loss that is due to many cycles of magnetization. So transformer में एक बार करंट आगे फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आगे की डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटाइजेशन आगे होता है, then we reverse it, then we again reverse it. So AC करंट में जब ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं, so it keeps on going through this loop. So अगर hysteresis ज्यादा हुआ तो लॉस ज्यादा होगा, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो पाएगा. So that's why we use soft iron for transformers and other materials to reduce the hysteresis loss. Note this down. I'll keep up to here. In the next class, we'll discuss all the doubts. Achha, you have to read these topics from the book. Read these topics from the book. Mostly theoretical है, but बहुत सारे terms आते हैं इसलिए confusing हो जाते हैं. So that's why I suggest you to read this topic from the book. That will be your homework for today. And in the next class, we'll be solving problems on this. And जो भी अगर book set out होते हैं तो we'll discuss those. And we'll do a quick revision of this whole chapter. Once this chapter ends, we can start with electromagnetic induction. That is also a very important chapter. Okay, tell me one thing. Friday and Saturday, the evening class, can it be shifted in the morning, 9 to 11? For this week, upcoming week.
and try to keep a class in between Sir. also. Say, Sir, on Friday there is school. okay, Friday you have classes. Okay. Only Saturday possible. Okay, Friday will continue at the same time, 6:30. And in between the week, I'll ask you for some extra class. Okay, that will be all for today. If you have any questions, you can stay and ask. Sir, I have doubt in the first question that you saw. Doubts in? First question. Fourth question. First question that we solved today. Your voice is not very clear now. Just say again. Sir, I have doubt in the first question that we solved today. That magnetic field BE. Okay. ये वाला. Yes. Okay. So net magnetic field दिया हुआ है. The value is 10 to the power minus 4 Tesla. So first you have to find the magnetic field along horizontal. So horizontal के लिए net magnetic field का component लेना होगा along the magnetic north. अच्छा, magnetic north और geographic north दोनों ही horizontal direction. But net horizontal में कितना हो जाएगा? That is BE cos delta. BE cos delta. So BE is this, and cos delta will be cos 30. That is 3/2. Sir, but BE is 10 raised to minus 4, right? Yeah, 10 raised to minus 4 into cos 30. That is 3/2. That is 10 root 3 into 10 raised to minus 5 लिख सकते हैं. एक और 10 ऐड करके यहाँ से 10 डिवाइड कर दिया. ये 5 root 3 into 10 raised to minus 5 आ जाए.